अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस एसएससी 19 का पास पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो सेशन 2025 में हुआ था। इसका टाइम अलाउड हमारे पास 2 और 45 मिनट है। टोटल मार्क सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के 42 हैं। सेक्शन बी मार्क 22। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ई पार्ट 1, ब्रीफली एक्सप्लेन एचपीसी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विद एन एग्जाम्पल। Part 2, enlist the main characteristic of third generation of in computer or state the role of antivirus in a computer system. Part 3, what is meant by conditional formulating in MS Excel or draw a diagram of component of a data communication model. Part 4, what is meant by computer network. Enlist any two types of basic spatial distance or write down any two characteristic of a good communication system. Part 5, how does an operating system act as a resources manager, or how cache memory increase the process. Part 6, differentiate between RAM and ROM, or what is plotter preferred over printer, give reason. Part 7, write any two uses of in-page software or compare infrared and microwave. Part 8, differentiate between attention and amplification, or how is mesh topology better than other topologies. Part 9, briefly explain the satellite communication media with a diagram. Or multi-modal authorization provide highly secure identification and verification authentication in modology. Comment. Part 10, how can a teacher view the name of only those students in a class who obtain A plus grade? Which feature of MS Excel should be used? Or if a baud rate is 56 kbps and the number of bytes per signal is 2 bytes, calculate the other data rate of communication channel. Part 11, suggest the best guide media with following characteristic of a organization. High bandwidth, high transmission rate, minimum delay, minimum impairment. And or an organization require an interconnection between is two building in the same geographical area. What type of network, LAN, MAN, WAN, PAN, etc. will be better and why? Section C, mark 20. Attempt the following part. Every question mark is 5 एंड देयर, और इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं। हर क्वेश्चन में दो दो पार्ट है, हमारी मर्जी हम कोई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, एक्सप्लेन इन डिटेल विद डायग्राम और एलोबरेट एनी 5 फंक्शन ऑफ अ ऑपरेटिंग system. Question number 4, what is the graphical representation of spreadsheet data helpful organization activities? Explain. Or compare psychosis and asynchronous modes of data transmission. Draw a diagram also. Question number 5, describe the following term: bandwidth, baud rate, data rate, signal to noise ratio, transmission impairment. Or describe the term computer architecture in computer network. Write down the advantage of using client server architecture over peer-to-peer architecture. Question number 6, how are half duplex and full duplex mode of communication helpful in daily life? Explain with sustainable example. Or differentiate between authentication and authorization. Briefly explain the authentication modology that can be useful on mobile phone. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपना पेपर बहुत अच्छे से दे सकें। थैंक यू।